Hi everyone, good evening. So I'll wait for another 2 minutes so that rest everyone can else can join in. Guys, wait for 1 second. I'm just setting up my camera as per the university norm. So that is why I've kept myself on mute. So just give me another 2 3 minutes.
Hi team, please wait for some time. There is some issue from the university end, so just let's wait for another 5 minutes. Coordinator will intervene. Okay, thank you.
Hi team, so sorry. There was some like university norms issue. So just wait for another 1 minute, then we'll start the session because there's some background they wanted to put, but unfortunately it's not allowing on my laptop. So give me 1 second, okay? Okay, team. I'm so sorry for letting you wait, guys. But there is some university forms, so they want me to put some background, but my system is not allowing it, so I had to change my background to plain background. Okay. So hi guys, my name is Osama Rahman. I'll be taking your operations management for this semester, and no Anand, you can wait. And the class will end at 8 p.m. only. We'll compensate for this 20 minute hopefully in the next sessions, right? So we'll be going together in the next 12 sessions for the operations management. And I'm basically from Delhi. I did my MBA from NMIMS Mumbai, and I have a total of 4 years of work experience in the same field. And we are going to stay in touch for the next 12 sessions. Hopefully, we'll have a more communicative session. And now, before we start, can we do a quick intro round? Like, if you guys can quickly unmute yourself and just tell me a little bit about yourself so that we'll have a more communicative session. Anyone can start. Anand, you can unmute yourself instead of messaging. I'm not sure if you guys have option to unmute. I highly doubt now. Since this is a first class, even I am not very aware about the rules. Can anyone confirm if you guys are able to unmute yourself and speak? Because I see only direct message. Oh, we can't mute. We can't unmute, right? Okay, okay, okay. Got it, got it, got it, got it. I can mute you, but you are, I guess, we are 84 people, so I'll just try one. I'm tracking Rakesh Kumar. They're asking to unmute, but if I'm clicking there, oh, actually, I'm able to leave. But I think to 84, it will take a lot of time. Let it be. Let it be. But if anyone wants, then you can just, put your hand up and then I'll unmute. Hi, Ratan. I have Uh, unmute yours. Hello. Hi, Ratan. Hello, sir. Good evening.
Am I Good audible? evening. Yes, you are. I'm Rathin Biswas. I'm a Yes. basically mining engineer, graduated Okay. from Bengal Engineering and Science University in Okay. 2005 base. Presently, I am working with Steel Authority of India Limited. Nice. Yeah, Perfect. Thank you, thank you. Ratin. Welcome to the class. Thank you, sir. If anyone else want to introduce, it's not mandatory because we are many and we have to mute. So if anybody else, otherwise we'll continue and hopefully we'll communicate more in the upcoming classes. Okay. So guys, I'll quickly share my screen so that I can show you what actually are we, you know, going to have in the next 12 sessions. This is just a gist, and of course, we are going to have it in a complete detail. Today, we are planning to do our introductory session, which we cannot because you don't have an option to unmute. And then we'll quickly just start with the basics of operations management. And because our 20 minutes has gone, so we'll just quickly start. In the next class, we are going to discuss about the remaining of this class and production management, then inventory management. Then we are going to discuss about the bullwhip effect in detail. Then we'll discuss about the cervical model of measuring service quality. Then later we are going to discuss about factors affecting the plant location and types of plant layout. This is a very important topic. Then the supply chain management conceptual method, lean manufacturing and agile manufacturing, which is related to your Scrum Masters, productivity and quality TQM, and total productive management, right? And 5S rule. Next to is going to be a doubt clearing session, but we are going to have a doubt clearing session in every class. Like whenever you have any query, you can raise your hand or you know put the message over here, right? So actually, I was planning for the introductory round, so there is no PPT for this class. But from the next class, we are going to have PPT. But I would prefer that we have more communicative session than watching a PPT, because that is going to be PPT. You will get it anyway after the class, but let's have interactive session more, and that would be better. PPT you will any which ways get after the class. So looking at the PPT is going to be quite boring. So if you guys are okay, we'll walk in such a way. And I think English should be the mode of communication for this class. But let me know if you guys have any query at any point of time, right? So talking about the operations management, since you don't have any option to unmute, so I'll only start. Operations management. Basically, it's a field of management that focuses on designing, overseeing, and improving the process that involve in producing good and delivering services. So any company that is any manufacturing unit or any organization has an aim to produce good and delivering services in an effective manner, or what we say is like any raw material that a company gets to convert it into a usable good. So operation management plays an important role in each and every step of the management. You know, from planning, first step of every management is planning, then organizing, then supervising the process that goes on, and production of goods and services. So it is basically concerned, ensuring that a business operations are efficient of, few resources should be used, because जितना कम resource use होगा उतना ही कंपनी का cost cutting होगी, उतना ही कंपनी का cost save होगा, and ultimately उतना ही yes, Shashi, I will provide you the PPT after the class. And of course, from the next class, I'm going to put it in the class as well. But I would prefer you guys listen to this more instead of focusing on PPT, that you can go through it later as well, right? So, talking about the operations management in simple terms, it is about the managing process that converts inputs, raw material होता है inputs में, एक labor होती है, energy होती है. Like I will give you an example of any medicine industry, like pharma industry, right? उसमें हम लोगों के different different types of raw materials होते हैं. Medicine होती है, medicine बनाने के लिए भी you need liquid, you need solid,
एंड फिर आपकी मशीन्स होती हैं, एक लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, लेबर लगती है। सो वो सब आपका आएगा इनपुट में जो हम डाल रहे हैं इधर से, राइट, एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रॉ मटेरियल एज होल। और कन्वर्ट होगा हमारा आउटपुट में आएगा एक प्रॉपर पैकेज्ड मेडिसिन, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज जो आपके कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करती है। सो ऑपरेशन मैनेजमेंट प्लेज अ रोल इन एवरी स्टेप ओवर देयर, राइट। So this is a basic introduction and the simplest introduction to operations management. But if you talk about a definition in the book, so operation management can be defined as the administration of business practices to create the highest level of efficiency possible within an organization. Okay, मैंने इजी लैंग्वेज में समझाया कि जो भी हमारा गुड और प्रोडक्ट बन रहा है फाइनल, वो एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बट उसका हमारा इनपुट मिनिमम होना चाहिए जितना हम अ, ताकि वेस्टेज कम हो, राइट। It involves in the responsibility of the ensuring that an organization resources are used in the best possible way to meet customer needs and organizational goals. Sorry, I'm having a throat infection, so bear with me for today. Now talking about the objectives of operations management. So operations management is basically हमने definition में describe कर लिया, but if we describe in detail, it produce the right goods and services that meet customer expectation. Every company has their mission and vision, right, what they are actually producing, what their ultimate goal is. तो वो एक जो कंपनी के स्टार्टिंग में एक गोल होता है कि हम लोगों को ये वाली कैंसर की मेडिसिन बनानी है, तो अल्टीमेट गोल भी वही होना चाहिए। अगर लास्ट में कैंसर की एक मेडिसिन बन गई है जो क्योर कर पा रही है लोगों को, तो दैट मीन्स वी हैव मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, राइट। So this is one of the objective of operations management. Next is produce them in a right quantities at the right time. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है दैट मीन्स वेस्टेज होगा, जो कंपनी को बेयर करना पड़ेगा लॉस। क्वांटिटी अगर कम हो गई है तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग बिकॉज आपकी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाती है, एंड देन यू आर नॉट एबल टू मीट द कस्टमर डिमांड बिकॉज उनकी डिमांड ज़्यादा थी बट आपने सप्लाई बहुत कम किया है। सो राइट क्वांटिटी और राइट टाइम पे होना चाहिए, ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट के थ्रू ही हो सकता है बिकॉज वो हर स्टेप पे दे चेक। सॉरी। Third objective is to utilize resource efficiently to minimize cost and waste, right? So जो resources हम use करेंगे वो efficiently use होने चाहिए। We cannot overuse the resource and we cannot underuse the resource. So जो हम resource को pay करते हैं उसका we should get refund, and उसका we can justify कि this labor has been used for 8 hours but किस लिए use हुआ, so that operations management can only decide. जो उसकी क्वालिटी है वो हमें इंश्योर करनी है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए बिकॉज एवरी बैच कैन हैव सम इशू बट वो इशू नेक्स्ट उसमें नहीं आना चाहिए। तो कंटिन्यूअसली योर प्रोडक्ट शुड बी इम्प्रूव्ड एज पर द डिमांड एंड एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट, राइट। और ये जब भी हो सकता है जैसे अब हम अडेप्ट करेंगे चेंजेस इन द मार्केट डिमांड एंड टेक्नोलॉजी, राइट। Now talking about key elements of the operations management, first is input. So this include raw material, human resources, capital, equipment, information and technology, right? For example, अगर कोई भी एक, if there is any bakery that we bake a cake or a cookies, so उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक आटा चाहिए होता है which we call flour, sugar, उसको बनाने के लिए लेबर चाहिए होती है जिसको मजदूर बोलते हैं, then we need some equipment like ovens, और एक प्रोसेस चाहने के लिए एक रेसिपी होनी चाहिए। सो राइट, ये सब हमारा इनपुट में आ गया जो हम पूरे प्रोसेस में यूज करेंगे। लाइक ओवन हम बिल्कुल लास्ट स्टेज में यूज करेंगे बट दैट डजंट मीन कि वी विल नॉट काउंट इट इन अ इनिशियल फेज बिकॉज इनपुट हमें सारे चाहिए होते हैं, बट ऐसा नहीं कि हम लास्ट मोमेंट पे आके ओवन खरीद रहे हैं, राइट। तो इनपुट शुड बी देयर, इनपुट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट इज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अभी हमारे पास एक आटा और शुगर है, अभी हम उसको केक बनाना है, सो दिस इज द सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट बिकॉज इट इज वेयर द इनपुट जो हमारे पास है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है आउटपुट में, एक प्रोसेस है पूरा, राइट। कोई भी मेडिसिन इंडस्ट्री का जैसे हमने बात किया, अब हम जैसे बेकरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इट में इन्वॉल्व होता है मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, हमने जो जो चीज़ें ली है वो असेंबल होंगी, पैकेजिंग होगा उसका, एंड डिलीवरिंग द प्रोडक्ट इन अ setting of services, design, customer services and execution in service industries, right? Then comes the output, right? These are the finished goods or services provided to customers. For example,
In a hospital the output is treated as satisfy patient, like अगर कोई हॉस्पिटल है उसमें पेशेंट आया है वो बिल्कुल ठीक हो गया है और वो सेटिस्फाई होके जा रहा है आपकी डिमांड से, तो ये आपका आउटपुट अच्छा हुआ। सेम गोस फॉर मेडिसिन, अगर वो क्योर कर पा रही है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, तो आपका जो पेशेंट है और जिसको हम कस्टमर बोलेंगे वो सेटिस्फाई है, राइट। एंड द लास्ट ऑप्शन इज फीडबैक मैकेनिज्म। ये हर इंडस्ट्री फॉलो नहीं करती है बट मेजोरिटी करती है, अब तो फार्मा इंडस्ट्री भी इसको करने लगी है। Sapna, I think you should have the syllabus, but if you don't have, I'll share the screen again in the last, and you can take the screenshot. But ideally, I guess you guys might be receiving the what we say syllabus, right? So feedback mechanism, as they say, is from customer, employees, and internal audits is to use improve the operation system continuously. Not talking about the functions of operation system. First is product and service design. So basically it determines what company will offer and how will it deliver the value, right? Next is process design and improvement, like designing efficient processes and continuously improving them, as I said. Then capacity planning, like ensure that the organization can meet the future demands. Next is inventory management, like balancing the cost of holding inventory with customer services level. Next is quality management, maintaining high standards and consistency in the output. Then coordinating with supplier, manufacturer, and distributors, like you know. And then last is scheduling, like managing when the operation will occur, and maintenance. So what we have discussed, it is like the functions of every management, every operation management is discussed. Like not talking about the importance of operations management, like as we have discussed, जैसे हमने डिस्कस किया हर स्टेप पे चेक होता है, तो अल्टीमेट गोल जो है आपके प्रोडक्ट का, दैट इज एफिशिएंसी, के वो जो आपने प्रोडक्ट बनाया वो कितना एफिशिएंट है, करेक्ट। तो जो एफिशिएंट होता है, अल्टीमेट गोल इज द एफिशिएंसी ओनली, राइट। जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया वो कितना असर किया जो आपने सोचा था। सो दैट इज द अल्टीमेट इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑपरेशंस मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो अगर अच्छा होगा तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, सो डिलीवरिंग द गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन टाइम। नेक्स्ट इज कॉस्ट रिडक्शन, हेल्पिंग इन कटिंग डाउन द ऑपरेशनल कॉस्ट। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, अब जैसे हमारे स्टेप पे चेक करते हैं चीज, राइट, जैसे हमने डिस्कस किया, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता है। अगर आप लास्ट में चेक करोगे पूरे एक चीज का कॉस्ट, तो देन आप यू कैन नॉट टेक एक्शन। अगर आप वापस पीछे एक्शन लेने जाओगे तो उसके लिए और कॉस्ट वेस्ट होगा, तो इससे बेटर है हर स्टेप पे चेक करो ऑपरेशंस के, इसके से कॉस्ट रिडक्शन होता है जो अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा कंपनी के लिए, राइट। Flexibility help organization adapt quickly to changing market demand. This is very important because in every step we are checking the operations. So इसमें अगर कोई मार्केट की डिमांड चेंज हुई है, अगर आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे एक मेडिसिन की डिमांड ज़्यादा थी, तो वो आप उसी बेसिस पे कॉल ले सकते हो। या कभी कभी डिमांड कम हो जाती है जिसका एक सोल्यूशन आ जाता है, तो फिर वो डिमांड उस हिसाब से आपको कम कर देनी चाहिए। अदरवाइज लास्ट में आपने प्रोड्यूस कर दिया है 1000, उसकी डिमांड है 5000, देयर इज नो पॉइंट। आपने प्रोड्यूस करता है 5000 बट उसकी डिमांड बीच में कम हो गई है बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स, कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जियोपॉलिटिकल हो सकता है, जैसे भी रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, राइट। So this is how every step, checking on every step is like very important and it has a lot of importance. Next is strategic role. So it aligns operational capabilities with business strategy to gain competitive advantage, right? इस ये सब जो हमने डिस्कस किया ये पूरा एक प्रोडक्ट के ऊपर था, बट ये जो लास्ट है ये कंपनी के लिए है जिसका एक स्ट्रेटेजिक रोल होता है। आप कहीं भी कुछ भी ऑब्जर्वेशन होगा तो you'll take a call and then it will help you in taking the operational competitive advantage, right? Now talking about types of operation. First is manufacturing operation and next is service operation. There are only two types of operation. So manufacturing, जैसा name indicate कर रहा है, basically focus on producing tangible goods like automobile, furniture, electronics, right? Service वाला होता है, नाम से पता लग रहा है उस लोगों की सर्विस करने के लिए, जैसे हेल्थ केयर, फार्मा जैसे हमने डिस्कस किया, एजुकेशन। सो ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है बिकॉज ये इंटेंजेबल प्रोडक्ट होता है, राइट। बैंकिंग होता है। But talking about challenges in operations management, like managing globalization and outsourcing, adapting to technology changes and automation, sustainability, environment concern, and managing the supply chain disruption. ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बिकॉज
आप टेक्नोलॉजी के लिए आप कितना भी चेक करो, जैसे एआई आता है तो एआई इट्स चेंजिंग एवरी डे, सो यू कैन नॉट, आप इतना क्विकली उसको अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। सस्टेनेबिलिटी इज लाइक, अब आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका कुछ एक्सक्रीटा आता है जो वाटर में जाता है, जो वाटर को पोल्यूट करता है, तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ कितना भी आप डेवलपमेंट कर ले, बट जब तक वो चीज़ सस्टेनेबल नहीं होगी लॉन्ग टर्म पे, लाइक आपकी वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट ना करे, आपके आने वाली जनरेशन के प्रॉब्लम ना करे, तो वो एक इन्वायरमेंटल कंसर्न रहता है। मैनेजिंग सप्लाई चेन डिसरप्शन होते हैं, सॉरी, लाइक जियोपॉलिटिकल वॉर, जैसे हमने डिस्कस किया, यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, या चाइना एंड यूएस जिस तरीके से एक दूसरे पे टैरिफ लगा रहे हैं, सो दीज आर द रीजन दैट दैट इज अनप्रेडिक्टेबल। और कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो आपको क्वालिटी और प्राइस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, राइट? सो इन बेसिकली व्हाट वी हैव डिस्कस अबाउट द, दिस इज द बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, एंड इज द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू डिलीवर quality good and services effectively and efficiently, right? So this is all about the introduction to the operations management. Let me know if you guys have any query. Yes, Rahul, it is good to for the feedback option where we can improve our services or product. I told you earlier, like many companies, only few companies used to have it. Nowadays, even pharma companies also have this feedback system, which is called as pharmacovigilance. So yes, you are correct. So we'll watch a small video, so that whatever we have studied, it will also, convert it in a video way. You can put on your chat, sorry, question in the chat till then. Then we'll go to the next topic. बाद में देगी सेल्स बाद, जैसे कि आईआरसीटीसी, अरे आपको ले जाने से पहले वो टिकट के पैसे ले लेती है ना, 1.5-2 महीने पहले पैसे ले लेती है। और टिकट तो बाद में देगी, प्रोडक्ट बाद में देगी, सर्विसेज बाद में देगी, सेल्स बाद में होगी, परचेज बाद में होगी, पहले सेल्स हो जाती है, कॉस्टिंग उनको बाद में लगेगी, पहले के पैसे आ गए। वो लिखा आता है बड़े बड़े टिकट पे कि हम आपसे केवल 40% ही टिकट का चार्ज कर रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट का। पर कोई ये बता सकता है कि जो 2 महीने आपने हमसे एडवांस में पैसा लिया उसका इंटरेस्ट आप हमसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आप उसका जो ब्याज ले रहे हैं तो वो कहाँ जा रहा है? तो क्या उसकी कोई गणना नहीं होती है? उसकी कोई नहीं होती। वो जो टिकट कैंसिलेशन का जो चार्जेस का अमाउंट जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? तो क्या हमारे पैसे अगर 40% लग रहे हैं तो क्या उसका इंटरेस्ट जो लग रहा है 6%, 7%, 8%, वो कहाँ जा रहा है? उसकी कोई बात नहीं। खैर वो अलग मुद्दा है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको समझ में आई। सेल्स और परचेज के बारे में बात चली जाती है। थोड़ा सा लाइट का फ्लक्चुएशन मैं अभी सही कर देता हूँ। मैं था ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी कि अपनी जो बिजनेस की डेली रूटीन की एक्टिविटी होती है सेल्स और परचेज। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट। यहाँ पर ऑपरेशन एक्टिविटी की बात नहीं, यहाँ पे ऑपरेशंस की बात है। अब जब बिजनेस के ऑपरेशन की बात होती है तो याद रखिएगा बिजनेस के ऑपरेशन में सबसे पहला ऑपरेशन कहलाता है प्रोडक्शन।
So team, let me know if you have any query. Devendra, your hand is up, so I'm unmuting you. Let me know if you have any. Okay, you put down your hand. Okay, so I think that was a mistake. So you can put down on chat if you have any query or raise up your hand, right? So this was the introduction to the operations management, right? Now talking about the you know the next topic, that would be the productivity, that comes under operations management only. So productivity is basically its measure, the efficiency of any production. So it typically defined as the ratio of the output to input in a production process, or basically in words it shows how efficiently resource like labor, material and capital are used. Give me 1 second, just yes team, so we were starting the productivity. Actually, I was thinking to start it in the next class, but we have got time, so let's start. So, productivity, as the name indicates, is the measure of efficiency of production. Like, for example, we have produced 100 tons of X product, and now it is typically defined as a ratio of output to input products process, right? अब जैसे आपका जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है वो गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म पे हुआ है, दैट विल कम एज यू नो न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर विल कम एज इनपुट, जो जो हमें रिसोर्स यूज किए थे, तो उसके बेसिस पे जब हम डिवाइड करते हैं तो प्रोडक्टिविटी यूज करते हैं, प्रोडक्टिविटी फॉर्म होती है, राइट? दिस इज अ फॉर्मूला ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री है जिसमें 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट आर यूज बाय 10 लेबर्स, राइट? 10 लेबर आर, आप कैलकुलेट कर लीजिए, राइट? सो इनपुट क्या हुआ? 10, राइट? 100 यूनिट हुआ प्रोडक्ट आउटपुट, तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हुई? 100 डिवाइडेड बाय 10, सो दैट मीन्स 10 यूनिट्स पर आवर. I hope that is clear. This is like a very important thing, but very simple yet very basic. Correct. Uh, I'll repeat. For example, 100 unit of product is being used by 10 labor hours. कोई हमने 100 चीज बनाई है 10 घंटे में, राइट? तो एक जो प्रोडक्टिविटी होगी वो डिवाइड करके 1 घंटे में कितनी बनी? 10 यूनिट. सो दैट इज द प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी बहुत सिंपल साउंड करता है, बट ये क्यों इंपॉर्टेंट है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट इज लाइक कॉस्ट रिडक्शन, राइट? जब तक आपको पर आवर की यूनिट नहीं पता लगेगी, हायर द प्रोडक्टिविटी मींस लेस इनपुट फॉर द सेम आउटपुट, राइट? अब प्रोडक्टिविटी अगर आपकी, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला 10 यूनिट 1 घंटे में, अगर प्रोडक्टिविटी हाई होती, फॉर एग्जांपल 50 यूनिट 1 घंटे में बनते, मतलब प्रोडक्टिविटी हाई है लेकिन आवर्स आपके सेम है, सो दैट मीन्स इट्स अ गुड थिंग. ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है कम उसी टाइम में ही, तो दैट मीन्स प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई, सेम आउटपुट है, लेस इनपुट है. सो कॉस्ट रिडक्शन के लिए बहुत हेल्प करता है ये. देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जैसे हमने डिस्कस किया, प्रोडक्टिव फर्म्स कैन ऑफर बेटर प्राइसेस, फास्ट डिलीवरी एंड हाई क्वालिटी. आप उसमें रीड कर सकते हो कि कहाँ कहाँ हम किस स्टेप पे पकड़कर हम वी कैन इम्प्रूव सो दैट प्रोडक्टिविटी विल बी हाई, राइट? एंड देन नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी. ये तो मतलब कॉस्ट रिडक्शन से डायरेक्टली आ जाता है कि अगर कॉस्ट रिड्यूस हो गया तो आपका हाई प्रॉफिट हो गया, राइट? जो 50 में हो रही थी वो अब आपकी 100 में हो रही है, सॉरी 25 में हो रही है, सो दैट मीन्स
और वो ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो दैट मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी है, दैट अब प्रॉफिट हो गया तो फिर सब चीज़ें लिंक हो गई हैं, इट विल हेल्प, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी का ग्रोथ होगी, इकोनॉमी में भी, मतलब एवरीथिंग इज लिंक टू ईच अदर, राइट? इकोनॉमिक ग्रोथ इज द नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी इम्पॉर्टेंट, इट्स अ वेरी, it plays a very key factor in natural economic development and GDP growth. And last is employee satisfaction. कम प्राइस में आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हो तो इससे बेस्ट तो कस्टमरों को चाहिए नहीं, करेक्ट? सो दैट इज द प्रोडक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? Now coming to like what is the difference, let's understand the plant layout, but we are going to discuss this in detail a lot. So there's a separate unit for this. So plant layout refers to an arrangement of machines or equipment of workforce in a facility to ensure smooth workflow. कोई भी कंपनी है, एक फैक्ट्री है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, देयर इज एन अरेंजमेंट ऑफ मशीन होता है, इक्विपमेंट का अरेंजमेंट होता है, वर्कफोर्स का अरेंजमेंट होता है कि कौन सा मैनेजमेंट किस जगह बैठेगा. Meanwhile, if you have any question on productivity, please let me know. Please put it on chat because I am not getting any messages. Everybody is mentioning they have understood, so I would consider that. But if you have any question, please put it down. Right? Plant layout refers to the arrangement of the machines, equipment, and workforce in a facility to ensure smooth workflow, reduce waste, and increase productivity. The choice of layout depends on the nature of product, production, volume, and workflow. The first and the simplest plant layout is a product layout, which is also known as line layout. So equipment and workstation are arranged according to the sequence of operation required to. मतलब सबसे सिंपल होता है, जैसे जो चीज सबसे पहले नंबर पे यूज होगी वो पहले नंबर पे होगी, ताकि आप इजीली एक स्टेप बाय स्टेप, जो मोस्टली सारी कंपनीज लाइन लेआउट ही फॉलो करती है. इन हाई वॉल्यूम जब वो होता है, क्योंकि आप बैक एंड फोर्थ नहीं कर सकते, आपने अगर स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया तो आपको स्टेप 2 3 के बाद 1 पे नहीं आना, आपको कंटिन्यूअसली निकलते चले जाना है. सो दैट इज नोन एज लाइन, सिंपल लाइन में होती है. फॉर एग्जांपल असेंबली लाइन इन ऑटोमोबाइल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, आप कार की कभी मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो सेम ऐसे ही होता है. कोई भी ऐसा नहीं कि स्टेप 5 के बाद आपको स्टेप 1 पे फिर आना है, नो, स्टेप 5 के बाद स्टेप 6 आएगा एंड इट विल बी कंप्लीटेड. सबसे सिंपल होता है तो इसका हाई एफिशिएंसी आउटपुट होता है, बिकॉज अब वापस नहीं आओगे तो चांसेस ऑफ एरर, चांसेस ऑफ ब्रेकिंग थिंग्स, रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग, ये सब कम हो जाते हैं. डिसएडवांटेज कभी कभी हो जाता है कि क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट रूल है जाने का आगे कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो आप फ्लेक्सिबल नहीं है, यू हैव टू डील विद द प्रॉब्लम एंड मूव ऑन. और एक भी मशीन अगर टूट गई तो फिर आपकी पूरी लाइन टूट जाएगी, तो आप काम ही नहीं कर सकते हो. सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस लाइन मशीनरी, राइट? आई होप यू गाइस अंडरस्टूड, राइट? ये होगी हमारा लाइन मशीनरी. Now next is the process layout, that is a functional layout. So equipment is grouped based on similar function. For example, ऑल द ड्रायर्स, कंपनी में एक प्रोसेस होता है, उसमें सारे ड्रायर अलग अलग टाइप के ड्रायर होते हैं. जैसे एक फ्लैट बेड ड्रायर होता है, उस पर चीज रख देते हैं. एक वैक्यूम ड्रायर होता है, हवा में ड्राई करता है. काम सबका सेम है, लेकिन ऑफकोर्स अलग अलग चीजों के लिए होता है, लेकिन सारे ड्रायर एक ही रूम में रखे हैं. अब आप उस रूम में जाओगे, भले से आपको ड्रायर एक ही यूज करना है, पर आपको सारे ड्रायर के आसपास जाना पड़ेगा, करेक्ट? सो ये है, इसके लिए यूज होता है जब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, बट छोटे छोटे बैच में होते हैं. मशीन शॉप, हॉस्पिटल में बहुत होता है. आप देखते हो कि नर्सरी है एक, फॉर एग्जांपल, या एक आईसीयू वार्ड है, तो सारे आईसीयू वार्ड एक जगह ही है, करेक्ट? तो इसमें क्या है, ये अच्छा है, फ्लेक्सिबल है, कि आपको कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप एकदम आ सकते हो. बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अच्छे से यूटिलाइज होती है, एक इन्वायरमेंट रहता है. बट प्रॉब्लम क्या है कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कभी कभी इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी मशीन कब यूज करनी है. So this is what the process and the functional layout means. Next is fixed position layout. The product remains stationary and work materials and equipments are brought to the site. This is where most of the machines जो heavy होती हैं वो अपनी जगह रहती हैं. और ये मोस्टली मिल्स के लिए होता है, जैसे शुगर मिल हो गया, ये बड़े बड़े मिल्स हो गए, ऑफ कोर्स आप उनको उखाड़ के नहीं ले जा सकते कहीं. सो दीज आर द फिक्स्ड पोजीशन लेआउट होते हैं, राइट? Argyadeep, what are you trying to say? Increase loudness, as in my voice, or are you speaking about something else? Because you mark question mark is there, right? So we know your voice. Okay, I'll try to speak more clear. Let me know if you guys are also feeling that the voice is little low. But yeah, I'm having throat infection, but like I think it's better now because I'm able to continue. Thank you. Thank you for pointing.
Okay, so we were on the fixed position. Yeah, so the when the product is large, अब जैसे हम will talk about sugar mill या कुछ भी सीवेज डंपिंग प्लांट्स होते हैं जो शुगर केन से शुगर बनाते हैं, राइट? अब आप इसको नहीं निकाल के जा सकते बिकॉज वो फिक्स होते हैं. एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, ये बड़ी बड़ी साइट्स होती हैं कंस्ट्रक्शन की, राइट? तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है कि भाई बहुत बड़े वॉल्यूम पे चीज़ें बनती हैं, मूवमेंट नहीं होता, तो आप कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है. आपको जाना पड़ता है बट वो एक जगह फिक्स है, तो यू नो कि ये आपको कैलकुलेटिव कॉस्ट में आ जाएगा. आपको ये नहीं है कि सरप्राइज मिलेगा कि अरे नहीं आपको तो वहाँ जाना था, बट बिकॉज दैट इज फिक्स. बट बिकॉज मशीन होती है तो आपको मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है, मैन हैंडलिंग आपको ज़्यादा लगता है, थोड़ा कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज समटाइम्स इट इज़ इन द अदर सिटी. Right. Next is cellular layout. So a hybrid layout that groups different machine into cells and produce a family part similar with a different. So it is used when a production involves moderate volume and product variety. कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी मशीन्स यूज होती हैं जो यूजुअली अलग अलग यूज होती है, बट कभी कभी प्रोडक्ट्स के लिए बिकॉज हाइब्रिड बनाना होता है तो उसके लिए कम वॉल्यूम में बट सेम मशीन यूज होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक और कस्टम मशीनिंग. तो इसके इसमें कोई सेटअप की जरूरत नहीं होती है बिकॉज ये आप हाइब्रिड है, कभी आपने ये वाली यूज की, ये वाली यूज की एज पर द रिक्वायरमेंट. क्वालिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत हाई होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी के बिना आप काम ही नहीं कर पाओगे. और बट इसका कभी कभी कॉस्ट हाई हो जाता है या कभी बिकॉज इसमें वेस्टेज बहुत होती है प्रोडक्ट की, एंड इसमें एक आपको प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, अदरवाइज इट इज विल कॉज योर ट्रबल. Now coming to combination layout, as the name indicates, it is a hybrid layout between mix of two or more layout typical to suit the specific needs of the production process. So it is used when products require different types of processing or assembly, and a car plant using product layout for assembly and process layout time machine. So the advantage is it balance flexibility and efficiency, and it's a complex thing, but because combination है, अब combination में everybody cannot understand, like only technicians who are like very thorough about it. Like if you ask me something about that is not related to my field, so I might be knowing it in a line layout कि simple अच्छा ये machine इस काम की, ये इस काम की, but अगर आप उसको hybrid कर दोगे तो I won't be able to understand. So you need a very high end technicians to deal with such thing, right? So this is a some, like these are the different types of layout that we have discussed: product layout, process layout, fixed position, cellular, and combination. Product, as we discussed, it is the best for mass production, whereas process is best for a customized small batch. Fixed is a large immobile product because उसकी एक जगह fix होती है जैसे sugar mill. Cellular is like moderate volume, and combination is a mixed products processes. Key features of the product layout is sequential workflow. For process layout is group by function, right? Uh, so that this is more about the layout scene. In the next class, we are going to study production management versus operations management. Let I think it's 8 o'clock. The class got started a little late. High-end technicians are qualified people. So Amit is asking this. Of course, they are like the highest qualified, I would say. Only because if, for example, if you think two machines are getting used, which जो usually साथ use नहीं होती है, because पर एक डिमांड आ गई है, फॉर एग्जांपल एक ड्रग डिस्कवरी चल रही है, तो उसके लिए अगर वो दो चीज़ें यूज होंगी तो वो बंदा बहुत, बिकॉज आप अगर इतनी कॉस्ट होता है मशीन के साथ एसोसिएटेड, राइट? आप ऐसे ही रैंडम यूज नहीं कर सकते. तो वो बहुत हाई क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए जो 100% श्योर हो कि हाँ ये चीज़ से ये डिसएडवांटेज एक लिमिट होगा. ओके अमित, I think that clears your doubt. Let me know if anyone else has any doubt in both the topics that we have discussed today. That is the productivity and operations management. Next class, I hope. Let me know if you have any feedback on my teaching. Also, I will try to change as per your understanding. Because you cannot speak, so just put it over here. That's why I'm giving like 2-3 minutes more. And because it's a direct message, so I won't feel bad. Be very honest because we have 11 classes more, so it will help me to improve and help you guys. Class slide, you mean to say PPT? Yes, you will get it. Let the topic get completed, then you will get it. But I think you might be having some
I don't know if they provide you book or something, but yes, you will get the PPTs. But I would suggest again, just listen to what we are discussing in the class. That will help more than PPT, because I think we all have passed that school age of, you know, referring PPT. Anything else? Sir, Elsa, can you put some videos or notes for us to take screenshot of your class? Hello sir, can you put some videos or notes for us to take screenshot of our class? यार videos का screenshot आप कैसे लोगे? I didn't get. But notes तो I will send it to you PPT. So अरुण, बट पीपीटी में तो आपको बहुत लिमिटेड टॉपिक्स आएंगे, एज इन लाइक यू विल ओनली गेट द हेडिंग्स, और डिटेल में तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं, अगर आपको बुक इन लोगों ने दी होगी तो आप बुक से पढ़ सकते हो। सिलेबस आपके पास होगा, होना चाहिए, अगर होगा नहीं होना चाहिए। अगर इफ यू डोंट हैव सिलेबस प्लीज लेट मी नो, आई विल शेयर इट हेयर। ऑपरेशन इज लाइक ऑपरेटिंग अ कंपनी। Yes, it is operating like operating a company from end to end. एक मतलब आप फॉर एग्जांपल आप केक बना रहे हो, तो आपके पास आटा है और आपको वो केक सेल करना है, पूरे प्रोसेस में ऑपरेशंस का काम रहेगा। आई होप। सी रतिन हैज कंफर्म दैट द सिलेबस इज अवेलेबल ऑन एलएमएस पोर्टल, सो प्लीज टेक इट फ्रॉम देयर, ओके? बिकॉज वहां से आप पढ़ो और मतलब सिलेबस से सब मिल जाएगा, राइट? I can't understand anything in this class. Can you provide PPT in class? And also discuss one more time, because there are many students who are from different fields. See, what I have taught you today is very basic management. There was no technical thing that I've discussed, right? But yes, I will, brief you again on this topic if required in the dot clearing session. Okay, because there are many students who are from. Okay, Ria, but we'll definitely. I have noted this, and we will reschedule this topic of operations management, because ज़्यादा हमने डिटेल में किया नहीं है, तो I don't mind. लास्ट दो सेक्शन डाउट क्लियरिंग है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। Sachin, you want me to unmute yourself, unmute you, right? Because you need to discuss your subject and stream. Yeah, from next class I'm going to share PPT, because that's what the rule is. Although I don't like PPT वाला thing, because if you communicate more PPT पे, फिर आपका सारा focus slide पे रहता है, जो ideally नहीं होना चाहिए। Sachin, just up your hand, because there are so many people I can't find you. Just raise your hand, I'll unmute you. And be a little careful while you speak, because everything is getting recorded. Sachin, you please lower your one time talking, that's okay, but I can't see you on the screen. So just, you know, up your hand, I will unmute you. You can see on the screen you're getting an option to raise hand. एक बार आप उस पर क्लिक करो, फिर आपका वो आ जाएगा मेरे सामने, so I will unmute you. Or if you want, you can put it on chat also. I think class is over. You guys can drop off. We will hopefully connect on Wednesday for the same class. Okay. Sachin, you can put it on chat, because I'm not able to see you over this list, because there's Sachin Sharma. Okay. Okay, guys, thank you so much. Let me know if you have any query in the next class. Then we'll go on to the next topic, and just keep me posted if you have any question. Thank you, guys. Have a great week ahead.